We are back again with one of the most interactive talk shows by HCH for creating awareness, right? Today is World Transverse Myelitis Day, and हम आपको बताएंगे ये जो शब्द मैंने बोला इसका क्या मतलब है और इससे क्या होता है. But let me first introduce our renowned speaker today from southern part of the country, right? We have Dr. Shyamke Jaiswal with us, who's consultant neurologist in Hyderabad Care Hospitals, Banjara Hill. He has done his education from MBBS King Edward Memorial Hospital and SGS Hospital, MD from Medical College Sholapur, his DNB in neurology from Care Institute of Medical Sciences, Hyderabad. And then he has also honed his skills with international advanced courses in EG. He has to his credit 12 international grants, 2 international observerships, and numerous publications in national and international journals. Having more than 10 plus years of experience in treating patients, he is member of, the list is long, but I can definitely tell you that he's a member of a lot of very important organizations like the Movement Disorder Society of India, World Stroke Organization, International Headache Society, International League Against Epilepsy, Indian Epilepsy Association, American Academy of Neurology, Indian Academy of Neurology, and Andhra Pradesh Neuroscience Association. I welcome you, Dr. Jaiswal. Thank you, Dr. Gaurav. And thanks, Dr. Jaiswal, from the bottom of our heart. I know neurologists are very, very busy species. You have taken out time to enlighten and make our patients, our viewers aware about this, something which they have not even heard of. Leave aside heard of, they can't even spell it. So transverse myelitis, इतना बड़ा नाम, ऐसा लगता है वो lymphosarcoma of the intestine. मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, right? बट हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले यही बताइए कि ये डे मनाया क्यों जा रहा है और ये है क्या? The transverse myelitis, transverse is very common, words. Transverse मतलब horizontal, and myelitis, myelin means it's a kind of disease of the spinal cord, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, and itis means inflammation is swelling. जब भी spinal cord में swelling होता है, it's kind of we get different kinds of what is the regions for that, and we get the kind of lesions, means what we say, क्या कर सकते हैं, क्योंकि spinal cord आधा कट गया है ऐसा, and we have the problem with the हमारे legs, stomachs, maybe the urine and the bowels, all those things problem comes. Kabhi kabhi it involves the hands also, but most of the time it involves the legs. So this is the transverse myelitis in common, we can say that. जो मैं समझ पाया और मैं व्यूअर्स को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे रीढ़ की हड्डी में एक जगह पे जब सूजन आ जाती है तो उसके नीचे के हमारे यहाँ तो अंग भी नहीं चलते हैं और जो हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं. Am I right, Dr. Jaiswal, in saying that? Yes, Dr. Gaurav. Yes. Yeah. So my next question to you is कि ये होता कैसे? किसको? So the different regions are there. Usually कहते हैं फिर for the medical science what they research that mostly because of some infections, mostly viral infections, sometimes bacterial infections, sometimes even TB also, and sometimes इसको क्या बोलते हैं because of the issue with the immunity, that's called autoimmunity. जैसे इसको demyelinating disease कहते हैं, like multiple sclerosis, NMO, उसके वजह से भी ये हो सकता है. And sometimes it happens because of the some trauma, कुछ अगर इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो वहां पे भी हो सकता है. And sometimes kind of bleeding inside the spinal cord, outside the spinal cord. So these are the regions. But most commonly, and sometimes hereditary भी होता है, genetic भी होता है, लेकिन most common what we come across with the infections and sometimes with the immunity issues in the inside our body, and third is the trauma. So they 3 common regions हैं. And is there a specific age group? Is there a specific gender which gets affected by it? Not specific gender is definitely not there. So all male, female are equally involved. And age group usually what we see usually it's in the more of adult age groups. Not in the elderly, we see very less. Elderly may because of trauma हो सकता है, लेकिन जो infections part है usually we see in the adult age groups. Adolescents, after the adolescents, maybe the 3rd decade, 4th decade, like that. We see that.
So that means here a very, very productive person will become unproductive or will become handicapped because of this swelling, which could be due to the reasons which you told us, right? And that's a very grave problem to be in, right? Nobody wants to be bedridden. Nobody wants कि वो चल नहीं सके, वो अपना टट्टी पेशाब खुद नहीं कर सके. तो ये बहुत ही grave problem है. So Right. is there a way that you can avoid this? This is very good questions, Dr. Gaurav. So definitely, yeah, one of the important cause for the disability. The patients usually wheelchair bound हो जाते हैं, and they're not able to walk, and they have to use the catheter for urines and for enema for the passing motion. All those things are there. So this is definitely how to prevent that. Definitely, one of the things we say that to avoid infections. Avoid infections. So commonly, it's kind of now COVID was there. Sometimes we cannot avoid infections, but definitely different kind of vaccinations. At least in the childhood, अगर जो बच्चे रहते हैं अगर वैक्सीन लिया तो different type of infection के chances कम होते हैं. That is the one reason, and definitely we have to about the immunity. We have to take the proper lifestyles, food जो immunity boost-ups के लिए होते हैं that will not cause the our immunity issues go down and cause the transmissitis. And definitely we need safe environments like safe drives, safe environments, and all those things, safe working place. All those things required for the prevent the trauma of the spinal cord. So these are the some things we can prevent, but not absolutely, but definitely we can prevent many part of the causing of transmissitis. तो आपने कहा कि वैक्सीनेशन लगाओगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर अपनी ड्राइविंग सेफ करोगे, एनवायरनमेंट को सेफ रखोगे तो चोट नहीं लगेगी, राइट? और खाना and immunity lifestyles, food diets also immunity booster. डाइट एक्सरसाइज करोगे तो इम्यूनिटी डाउन नहीं होएगी. Very well said. But suppose now after all precautions also, अगर किसी को ये हो जाता है तो उसे पता कैसे चलेगा? How will that person come to know? And secondly, when should that person seek medical advice? So usually क्या है ये this transmissitis it's called acute conditions. Acute मतलब आप जब इस पेशेंट को होता है, किसी पेशेंट को होता है तो immediately they get to know कि उनके लेग जो है थोड़े heavy हो गए, it's not working, maybe some weakness. Sometimes they feel no sensation, पैरों में sensation नहीं है, numbness हो रहा है, ऐसा उनको फील होता है. कभी कभी they not able to pass urine, they're not able to pass their उनका जो मोशन होता है खुद ब खुद निकल जाता है. तो these are the initial symptoms होते हैं. कभी कभी बैक पेन होता है. तो these are initial symptoms, mainly what we say motor symptoms. Motor symptom मतलब उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती लेग में, कभी कभी हाथ में, यूजुअली लेग में. और सेकेंड की ना उनको नमनेस और कुछ फीलिंग नहीं है लेग्स में, ऐसा फील होता है. एंड थर्ड जो मोस्ट कॉमन है कि यूरिन जो नॉट वो पास नहीं कर सकते हैं, और लैट्रिन में कभी कभी ऐसे हो जाता है बिना 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 समझे हुए. तो दिस आर द सिम्टम्स. और जब ये ऐसे सिम्टम्स हो रहा है तो डेफिनेटली वी नीड मेडिकल अटेंशन एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज जितना जल्दी मेडिकल अटेंशन लेंगे, बिकॉज मैं जैसे बताया कि इट इज माइलाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग. तो हम लोग के पास कुछ मेडिसिन हैं जो स्वेलिंग को इमीडिएट कम कर सकते हैं, तो ये ज्यादा सीवियर नहीं होगा, इट्स नॉट बिकम सीवियर, एंड वी कैन प्रिवेंट. वी हैव अगर प्रॉपरली मेडिकल एडवाइस लिया तो वी कैन prevent disability, and sometimes we can cure also completely. We have seen many patients getting cured with the proper medical attention at the proper time. Right. So I think most of the symptoms जो आपने बोले कि पेशाब बंद हो जाना, लैट्रिन का निकल जाना, पैर नहीं चलना, are very acute symptoms जिसमें ऑटोमेटिकली पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा. पर क्या ऐसा भी होता है कि सिर्फ बैक एक हो रहा है, और बैक एक आपको पता है कि पीपल जनरली इग्नोर, राइट? सो इज देयर अ स्पेसिफिकेशन टू दिस पीठ का दर्द कि हम डॉक्टर के पास जाएं और उसे इग्नोर नहीं करें? जहां तक ट्रांसमिसिटिस का सवाल है, तो दैट विल कम विद द बैक एक, यूजुअली एक्यूट आता है. बहुत ही रेयरली जो हेरिडिटरी केस होते हैं या जेनेटिक केस होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्रॉनिक केस होता है. तो यूजुअली इट विल कम, जो सिम्टम्स होते हैं वो इमीडिएटली आ जाएंगे, 1-2-4 दिन में आ जाएंगे. इट नॉट वेक इन पहले बैकिंग स्टार्ट होगा. बैकिंग स्टार्ट होने वाले थिंग्स डिफरेंट है, वो भी कभी कभी पैरों में प्रॉब्लम कर सकते हैं. तो आई जस्ट लिटिल बिट डेविएट फ्रॉम ट्रांसमिसिटिस, बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो समझना चाहिए कि बैकएक नाउ इज वेरी कॉमन सिम्टम, बिकॉज बहुत से सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं और वी वर्क ऑन सिस्टम्स फॉर लॉन्ग टाइम. जब बैकएक के कारण बैकएक से वो पेन निकल के आपके थाई से लेके लेग में आ रहा है,
एंड कंटिन्यूस वो इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन आ रहा है, या फिर समटाइम्स आपको ऐसे लग रहा है कि ना आपके पैर उठ नहीं रहे हैं, पैर स्पाज्म हो गया, लेग स्पाज्म हो गया, तो वो सिम्टम्स है कि ना आपके कुछ स्पाइनल कॉर्ड के नस दब रहे हैं एंड यू नीड टू गो फॉर मेडिकल अटेंशन। बैकएक को हमेशा इग्नोर करना इज नॉट गुड। और जब आपके सिम्टम्स ऐसे रेडिट हो रहे हैं और योर लेग बिकम स्टफिक और स्पाज्म हो रहा है, कंटिन्यूस पेन हो रहा है, यू कैन नॉट वॉक फॉर फ्यू स्टेप्स, एक किलोमीटर चले कि आपको बैठने की जरूरत पड़े, तो दीज आर द things we should seek medical attention for the spine specialist. Right, absolutely. I think that was a very important piece of advice because लोग इसको prolong करते रहते हैं and then फिर वो nerves ज़्यादा दब जाती हैं जिससे कि irreversible damage हो सकता है. I completely agree with you. But okay, now you told that अगर आपको ऐसा कोई भी symptom होता है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, hospital की emergency में आके admit हो जाइए and they'll refer Yes. you to the neurologist. But what are the diagnosis? How do you make the diagnosis of this? What are the tests to be done? And what are the treatment options for the patient here? तो डायग्नोसिस के लिए एनी न्यूरो प्रॉब्लम वी नीड टू डू द स्कैनिंग, वी हैव टू डायग्नोज परफेक्टली। तो इसके लिए एमआरआई स्पाइन करना पड़ता है हम लोग को, दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन्वेस्टिगेशन वी डू फॉर द ट्रांसमाइटिस। बट बहुत बार क्या होता है कि एमआरआई स्पाइन भी नॉर्मल होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक जो अगर पोस्ट इन्फेक्शन इन्फेक्शन की बात होता है तो उसमें एमआरआई स्पाइन नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, तो उसको डायग्नोस करने के लिए देन वी हैव टू गो सेकंड स्टेप दैट्स कॉल्ड लंबर पंक्चर और सीएसएफ टेस्ट करना पड़ता है। तो वी गेट टू नो कि ना हाँ देयर इज समथिंग, सम इन्फेक्शंस आर देयर, एंड समटाइम्स इवन सीएसएफ टेस्ट नॉर्मल होता है, लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम होता है दैट्स कॉल्ड समथिंग कॉल्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड देन वी ट्रीट दैट। बट जैसे मैंने बताया था इम्यूनिटी कारण हो सकता है, जैसे लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो डेफिनेटली वी गेट द सम फाइंडिंग्स स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज दिखता है हम लोग को, कभी कभी ब्रेन में स्पाइन स्कैन करना पड़ता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस केस में देखने के लिए कि कुछ डैमेज ब्रेन में भी है क्या। और these are the main things, MRI spine और sometimes brain and sometimes CSF studies करना पड़ता है हम लोग को to make a proper diagnosis. श्योर। सो आपने बताया कि एमआरआई का स्कैन करना जरूरी है, तो जिस फैसिलिटी में पेशेंट जाए वहां पे एमआरआई होना जरूरी है, राइट? Yes. राइट। उसके रीढ़ की हड्डी के पानी का टेस्ट करते हैं तो लैब होना भी बहुत जरूरी है। और कई बार अगर ये भी दोनों नॉर्मल आता है तो हमें सर का स्कैन भी करना चाहिए कि ब्रेन में किसी चीज के कारण तो स्पाइन या में फर्क तो नहीं पड़ा है। Right. So I think, and what are the treatment options the patient has? जी, तो ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताया कि माइलाइटिस मींस आपको पता है कि आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो जो स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग जो कॉमन टर्म है, तो वो स्वेलिंग को कम करने के लिए यूजुअली वी गिव द इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स। जो इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स है ये कॉमनली यूज होते हैं जो डिक्रीज स्वेलिंग, सो फर्दर जो स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व डैमेज नहीं होते और जो भी स्वेलिंग है वो कम हो जाते हैं। तो इट विल डेफिनेटली मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट इफ वी गिव स्टेरॉइड एटलीस्ट फॉर 5 days, यूजुअली क्या होता है कि वो स्वेलिंग में आता है, पेशेंट बिकम नॉर्मल आल्सो। एंड सम पेशेंट जैसे जहाँ पे बताया जैसे इम्यूनिटी का इश्यूज है लाइक ऑटो इम्यूनिटी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देन वी हैव टू गिव समथिंग इम्यूनोथेरेपी वेयर वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ मेडिसिन, लाइक कभी कभी इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू गिव द बॉडी से द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए। एंड समटाइम जैसे मैं ट्रॉमा केस में बताया कि अगर वहाँ पे इंजुरी है and some blood collections and so they require surgical intervention also, but commonly we have to the steroid का second steps अगर नहीं कम हुआ तो we have to give some immunity booster immunotherapy like immunoglobulins or monoclonal antibodies and some surgical intervention sometimes if required. So I think viewers एक चीज सोच रहे हैं कि हमने तो बात करी थी कि ये स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, तो क्या इसमें एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करते? जी नहीं, क्योंकि यूजुअली जो ट्रांसमाइटिस होता है यूजुअली इज पोस्ट वायरल, तो मोस्टली ये वायरस की वजह से होता है। जहाँ तक आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है एंटीबायोटिक के बाद जो पूछा, तो समटाइम जैसे मैंने बताया था शुरू में कि ये कभी कभी बैक्टीरिया और टीबी से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इट इज बिकॉज ऑफ वायरस। तो यूजुअली वायरस के लिए स्पेसिफिक का कोई एंटीवायरल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनली एंटीवायरल विच वर्क्स इज हर्पीस, जो हम लोग को चिकन पॉक्स और वो सब होता है दैट इज, तो उसके लिए ये जो होते हैं ये नॉन हर्पीस वायरस से होते हैं, इसके लिए एंटीवायरल एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर हम लोग को कुछ बैक्टीरिया अगर दिख रहा है या टीबी की वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली स्पेसिफिक हम लोग का एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी टीबी मेडिसिन देना पड़ता है, टीबी का मेडिसिन देना पड़ता है, बट दैट इज लेस कॉमन देन द एंटीवायरल पोस्ट So वायरल होता है। what I've understood is that it is more of a
इम्यूनोजेनिक और या इम्यून रिलेटेड एक रिएक्शन है जो कि वायरल की एंटीबॉडी से भी हो सकता है, आपकी खुद के शरीर की एंटीबॉडीज भी आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। yes मोस्ट ऑफ doctor. द केसेस, राइट? सो अंडरस्टूड, आपने पेशेंट्स को दवाइयां दी, सब कुछ किया। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट विल गो वॉकिंग होम and what percentage of patient will take time to improve and what will not improve? How Yeah. does that work? So this also is very important questions. Usually this called prognosis. Usually whenever patient come to us, वो पूछते हैं, this is a very genuine question कि ना भाई outcome क्या है, कब तक हम लोग इससे बेड में रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट रीजन, इटियोलॉजी में किस वजह से हुआ। तो अगर ये एक्यूट ट्रांसवर्स माइलिटिस अगर इट्स पोस्ट वायरल, यूजुअली वो स्टेरॉइड की वजह से इम्प्रूव हो जाता है। ऑलमोस्ट 70-80% केसेस में दे गो वॉकिंग। और कुछ पेशेंट जो 20% विद सम फिजियोथेरेपी, सम काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन, दे इम्प्रूव 90%। ओनली 5 to 10% जो केस हैं जो रेस्टोरल वीकनेस रहता है, जो रिक्वायर परमानेंट डिसेबिलिटी होते हैं, लेकिन 90% जो पोस्ट वायरल होते हैं वो इम्प्रूव आते हैं। इवन द पोस्ट बैक्टीरियल वो भी काफी हद तक इम्प्रूव जाते हैं। जहां तक टीबी का सवाल है, जिसको जो अगर टीबी के वजह से ट्रांसमाइलिटिस हुआ, टीबी स्पाइन हुआ, तो उसमें आप कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी ऑफ टीबी। अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है तो डेफिनेटली इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकवर, थोड़े रेसिडुअल वीकनेस हो ही सकते हैं, एंड सम पेशेंट विल अगेन रिमेन इन द परमानेंट डिसेबिलिटी आल्सो, द लेस मोर देन द पोस्ट वायरल। देन जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, जो जैसे मैंने बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या न्यूरोमाइलिटिस करके और इम्यूनिटी डिजीज होती है, तो दीज आर लिटिल बिट मोर सीवियर। तो वहां पे केस में क्या होता है, दे विल नॉट बी completely recovers, but I'm not telling all the patients, but many patients you can say the 30-40% get improved. 30-40% they will have the residual weakness, but they were um, able to do their activities by some help, and 20% remain disabled also. Usually there's something called neuromyelitis, where the it's called NMO antibodies होते हैं, MOG antibodies, ये सब तो नाम है एंटीबॉडीज की। अगर ये सब है तो दे और मोर सीवियर इम्यूनिटी डैमेज करते हैं, तो इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी दिख सकते हैं, द पीपल बिकम व्हील चेयर बॉन्ड्स। एंड जहां तक ट्रॉमा का सवाल है, डिपेंड्स, अगर ट्रॉमा पे डिपेंड करता है कितना ट्रॉमा। अगर माइल्ड ट्रॉमा है तो कुछ दिन डिसेबिलिटी, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन इम्प्रूव जाते हैं। अगर सीवियर ट्रॉमा है, रीढ़ की हड्डी ऑलमोस्ट हड्डी टूट गई है, स्माइल कॉर्ड पूरा डैमेज हो गया है, तो परमानेंट डिसेबिलिटी काफी हद तक रह जाता है उस केस में। Right. It is such a good news to hear that 80% of patients, they recover spontaneously after steroid therapy and they go walking home. That's a very encouraging parameters. I think the key is कि young patients जल्दी recover करते होंगे, and अगर आप जितनी जल्दी हॉस्पिटल आएंगे उतनी जल्दी आपको दवाई मिलेगी और उतनी जल्दी आप वापस दोबारा वॉक करते हुए घर जा सकते हैं। But Dr. Jaiswal, you know that you have Suvitas in Hyderabad has treated a lot of patients for you, right? So Right. and how do you think that this journey from acute care to subacute chronic care in a inpatient rehabilitation center like HCA Suvitas, right? How this is beneficial for the patient, and what do you see the prognosis if that intervention is also given to the rest 10 to 15% of the patients? तो न्यूरोलॉजी जो डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, इट्स नॉट लाइक कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। इसमें न्यूरोलॉजी में रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। इट्स जस्ट नॉट confined to the transmyelitis, any kind of neurological disease, से स्ट्रोक है या पार्किंसंस है या फिर पेशेंट को ट्रांसमाइलिटिस है या एनी न्यूरोपैथी है, जीबीएस है, मेनी काइंड्स ऑफ न्यूरोलॉजी डिजीज है। तो रिहैबिलिटेशन इज sometimes more important part of the disease of the managing the patient than the just giving treatment. So because I am talking in by the channels of SCH Suvitas, it's not like that, but definitely I am with this with this centers almost a decade now, and ये मैं कह सकता हूँ कि हैदराबाद में it was one of the first centers we having the comprehensive rehabilitations, just not only physical therapy, but the occupational therapy, nursing cares, speech therapy. Now they have come with the panchkarma, acupuncture, all those things also has come. So I have seen, because I have seen the patients sending over a decade and their outcomes is getting very good.
So because no one wants to be disabled or wheelchair bound. और जहाँ तक young लोग हैं, even the elderly people, I see that they want to become more independent because they have been independent since whole life and they don't want to become dependent on the fag end of their lives. तो ये बहुत important है. तो जहाँ तक ट्रांसफॉर्मालिटी का सवाल है, जैसे मैंने बताया कि दोनों पाँव काम नहीं करते हैं, कभी-कभी यूरिन और मोशन का इशू होता है. So in that, rehabilitation is very important role to take out uh, the patient's what to say the improve the strength of the leg and उनको independent बनाने के लिए sometimes with this with good rehabs I seen that patient are wheelchair bound they are able to walk with some support and जो walk with support कर रहे हैं they can independently walk. So good physiotherapy, aggressive intensive physiotherapy rehab is very important. And it definitely is जैसे मैंने बताया कुछ पेशेंट जो 20% पोस्ट वायरल है इम्यूनिटी में तो और भी ज्यादा पेशेंट्स हैं वो डिपेंडेंट होने के चांस होते हैं. ट्रॉमा में कुछ सीवियर ट्रॉमा है तो वो भी डिपेंडेंट. हम लोगों ने बहुत सारे केस नाउ देन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सो कॉमन व्हेन वी इन सिटीज बिकॉज ऑफ सो मच एक्सप्रेस हाईवेज देयर वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होते हैं उनके पैर काम नहीं करते. तो इन सब पेशेंट्स के लिए यंग पेशेंट वी सी द एग्रेसिव फिजियोथेरेपी comprehensive physiotherapy is very important part of the rules. Can't agree more with you, Dr. Sham. It is very heartening that doctors like you value this value chain of this rehab centers. And as you said, we at HCH Suvitas are, I think, the only rehab center which is now spread across Hyderabad, Bangalore, Kolkata, Delhi, NCR, 6 centers where we literally do a comparative analysis of the outcomes. जहां पर लोग सिर्फ फिजियोथेरेपी को रिहैब मानते हैं, आउटकम की बात भी नहीं करते हैं, वहां पे वी हैव गॉन टू दैट लेवल दैट वी हैव स्टार्टेड पब्लिशिंग दीज आउटकम्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स. सो आई एम वेरी हार्टनिंग दैट आपने इतना अच्छे तरह से रिहैबिलिटेशन के बारे में समझाया. व्हाट आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स इज दैट occupational therapy is something again which is very missed, right? And you definitely mentioned occupational therapy, right? And occupational therapies, I always say hospitals are there to save lives, acute incidences, to get you to normal recovery where you can do whatever you want to do. Our centers in Hyderabad, Bangalore, everywhere have these occupational therapy labs, balance labs, which again for these patients become very important, right? So I think that's love music to my ears and to many of the patients who have gone through it. What is your message to our viewers today when World Transplantators Day? What is their one message which you like to give to our viewers? In our country, our India is growing up with good awareness, good knowledge, and we are the younger populations. And you see that our roads are also expanding all around the world. We have roads all around. We get having the good cars, good vehicles, good trains. Recently, the very unfortunate event happened where the rail train accident was there. But we see so many things are happening. Our life has become fast-paced. We have urban lifestyles. So seeking the health is also very important. It's not neglect our health, which we are seeing nowadays, even in the younger populations. जैसे आपने पूछा एक क्वेश्चन बैक किक के बारे में, जो बैक किक जो है कीप ऑन इग्नोरिंग. तो अरे अभी तो चल रहा है, थोड़ा बहुत बैक पेन है, मैं थोड़ा बैठ गया हूँ, काम ज्यादा कर लिया, ऐसा हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. You should seek the health attention, medical attention as soon as possible. और acute transplant तो बहुत ही, as I told you, even 10-20% become disabled. This is a big number. तो वो भी medical attention लेना जरूरी है. As I told you, if you take the medication as soon as possible with the steroid, with I'm sorry, with the immunotherapy, we can recover almost completely, almost 80-90%. Even in the multiple sclerosis जहाँ immunity की problems है, वहाँ भी अगर हम लोगों ने medical attention बहुत जल्दी सीख किया और उसको treat लिया, तो it will definitely cause much good recovery. And definitely ultimate the part of that, the last part of that, the rehabilitations is also very important. Is the important part of the role of the neurological disease, just not the physiotherapy. And we need to be comprehensive with the proper seeking the health attentions. The one line I'm telling, the seeking health attentions, taking the treatments, proper nutrition, taking the treatments, and going for the rehab to the complete the journey of the recovery. Thank you so much, Dr. Sham. We know you are a very busy clinician. This video has been
viewed by more than 100 people in the last 30-35 minutes, has been shared more than 50 times, and this will keep up happening in the next 24 to 48 hours. My final plea or appeal to my viewers is कि एक simple काम करिए कि कार में जो बेल्ट है वो सिर्फ इसलिए मत पहनिए कि पुलिस वाला पकड़ लेगा या टू हो रहा है। कार में बेल्ट पहनिए अगर आप अपने पैरों पे चलना चाहते हैं। आपकी जिंदगी आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर जायसवाल, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर टॉक शो एंड शेयरिंग सच pearls of wisdom with our viewers. Thank you so much. Thank you very much. Thank you all the viewers. Have a good life ahead and good night. Thank you. Thank you. Good night.